Scalability and elasticity in cloud computing. So first we are going to discuss about cloud elasticity. So cloud elasticity refers to the ability of a cloud to automatically expand or compress the infrastructure resources on a sudden up and down in the requirement so that the workload कैन बी मैनेज्ड एफिशिएंटली। मतलब क्या है कि क्लाउड इलास्टिसिटी किसी भी क्लाउड की एबिलिटी को रेफर करती कि कैसे जो भी क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज पड़े हैं वो कैसे उन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को एक्सपेंड या कंप्रेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट में अचानक से कोई अप या डाउन होता है तो कैसे वो क्लाउड के ऊपर पड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को कंप्रेस करेगा या फिर एक्सपेंड करेगा। तो बेसिकली दिस हेल्प्स अस टू मिनिमाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट। सो क्लाउड इलास्टिसिटी को हम हर एक सिनेरियो के लिए यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। बेसिकली इट इज़ हेल्पफुल टू एड्रेस द ओनली दो सिनेरियोज वेयर द रिसोर्सेज requirement fluctuate up and down suddenly for a specific time interval। तो क्लाउड इलास्टिसिटी को हम सिर्फ उस सिनेरियो में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो अप एंड डाउन होती हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे। सो इट इज़ नॉट क्वाइट प्रैक्टिकल टू यूज़ वेयर द persistent resource infrastructure is required to handle the heavy workload. So it is most commonly used in pay-per-use. It means public cloud services where IT managers are willing to pay only for the duration to which they consume the resources। तो इस बेसिकली इसको हम पब्लिक क्लाउड सर्विसेज में यूज़ करते हैं जहाँ पे जो भी IT मैनेजर्स हैं वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली ही पे करते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंगली ही पे करते हैं जिस टाइम पे उन्होंने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया होता है, यूज़ किया होता है। सो नेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट की एग्जांपल दे रखी है कि कैसे लेट्स डिस्कस इट। Consider an online shopping site whose transaction workload increases during festive season like Christmas. So for the specific period of time, the resources need spike up. In order to handle this kind of situation, we can go for the cloud elasticity service rather than the cloud scalability। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे ओनली फेस्टिव सीजन के ड्यूरिंग ही जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम क्लाउड इलास्टिसिटी को यूज़ करेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं क्लाउड इलास्टिसिटी को हम उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो परमानेंटली चेंज नहीं होती हैं, वो डायनेमिकली चेंज होती हैं। सो एज सुन एज द सीजन गोज आउट द डिप्लॉयड रिसोर्सेज कैन देन बी रिक्वेस्टेड फॉर विड्रॉल। Next we are going to discuss about the cloud scalability. So cloud scalability is used to handle the growing workload where good performance is also needed to work efficiently with software or applications. So scalability commonly used where the persistent development of resources is required to handle the workload statically। So basically जहाँ पे हमें फिक्स्ड रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेज की, उस केस में हम यूज़ करते हैं क्लाउड स्केलेबिलिटी को, जहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेज की दैट इज़ फिक्स्ड। सो नेक्स्ट इज एग्जांपल। सो एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है डाटाबेस की कि फॉर एग्जांपल यू आर द ओनर ऑफ कंपनी whose database size was small in the earlier days, but as the time passed your business does grows and the size of your database also increase। कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के ओनर हो, पहले जो आपका डाटाबेस का साइज़ था वो स्मॉल था, पर जैसे ही कंपनी ने ग्रो किया उसका जो डाटाबेस का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी कस्टमर है वो क्लाउड सर्विस वेंडर को रिक्वेस्ट करेगा डाटाबेस की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि जो भी वर्कलोड है उसको हैंडल किया जाए एफिशिएंटली। सो the cloud elasticity is totally different from the scalability. So scalability is used to fulfill the static needs
where the elasticity is used to fulfill the dynamic needs of the organization. ओके कि स्केलेबिलिटी को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं, पर इलास्टिसिटी को हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डायनेमिक नीड्स हैं, जो नीड्स चेंज होती रहती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं इलास्टिसिटी को. सो स्केलेबिलिटी इज सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड वेयर द customer have to pay per use. So in conclusion, we can say that scalability is useful where the workload remains high and increase in the fixed manner. So next is type of scalability. As you can see in the diagram, there are the three types of scalability. First one is vertical scalability, or you can say scale up. Second is horizontal scalability, and third one is diagonal scalability. So first one is vertical scalability. So as you can see in the diagram, in this type of scalability we increase the power of existing resources in the working environment in an upward direction. Next is horizontal scalability. So in this kind of scaling, the resources are added in the horizontal direction. You can see in the diagram, resources are added in the horizontal row. Next is diagonal scalability. It is a mixture of both the horizontal and vertical scalability where the resources are added both vertical and horizontal direction. So you can see in the diagram, here the resources are added both in vertical and horizontal direction. Next is difference between the cloud elasticity and scalability. So the first difference is elasticity is used to meet the sudden up and down in the workload for a small period of time, whereas the scalability is used to meet the static increase in the workload. Next is elasticity is used to meet the dynamic changes where the resources need can increase or decrease. मैंने आपको पहले ही बताया कि elasticity को हम उस केस में यूज़ करेंगे जहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो डायनमिकली चेंज होती हैं. So scalability is always used to address the increase in workload in an organization. So next difference is elasticity is commonly used by small companies whose workload and demand increases only for a specific period of time, whereas the scalability is used by big companies whose customer circle persistently grows in order to do the operations efficiently. The last difference is it is short term planning and adopted just to deal with an unexpected increase in demand or seasonal demands, whereas the scalability is long term planning and adopted just to deal with an expected increase in demand. So this is all about cloud elasticity and scalability and the difference between them.